Uh, Very good afternoon. Uh, let's start with a new chapter, that is electrical system. Electrical system. This is chapter number, unit number 4. 4. Up to this, we have discussed 3 chapters. First one is energy scenario. And renewable systems or renewable sources. Second chapter, that is we have discussed about mechanical system. Third chapter, that is cogeneration. And fourth chapter that we are going to discuss, that is electrical systems. See here, our subject is energy conservation, right? Energy conservation in the sense of we have to conserve the energy for future, right? So in the electrical system, we have to discuss a new technology, that is electrical vehicles, right? The research is on going with these electrical vehicles very fast, right? आपने देखा होगा कि फेब में दिल्ली में नोएडा में 2000 ऑटो एक्सपो 2020 हुआ था, तो उसमें से जितने भी कंपनीज आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल वहाँ पर लॉन्च किए थे, मीन्स वहाँ पर रखे थे. अभी वो धीरे धीरे लॉन्च होने वाले हैं. तो हमें ये पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल वर्क कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सिस्टम्स रहते हैं. तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे. बहुत ही सिंपल है. इलेक्ट्रिकल आपने देखा होगा कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले हैं, तो चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं. तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उसके प्राइस के हिसाब से उसका जो एक बार चार्जिंग करने के बाद कितना वो जाएगा, तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड. और इससे टोटल क्या होगा, अभी जो अपने कन्वेंशनल व्हीकल्स है उसमें से ज़्यादा ग्रीन हाउस के पोल्यूटेंट बाहर आते हैं, राइट. उसके वजह से ये एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है. और जो क्रूड ऑयल है, जो बायो फ्यूल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, फ्यूल्स यूज़ होते हैं. तो वो हमें कम करके, और ये पोल्यूशन कम करने के लिए, एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें ये चैप्टर है. और ये सब्जेक्ट भी इस सब्जेक्ट में उसी तरह दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में मैंने बताया. इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल. तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दैट यूज इलेक्ट्रिक मोटर्स एज सोर्स ऑफ प्रोपल्शन. घूमने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल. उसमें पार्ट बहुत कम रहते हैं, राइट. इलेक्ट्रिकल मोटर रहता है, बैटरी रहती है, और वो उसी हिसाब से चलता है, राइट. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूटिलाइज एन ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैव जीरो टेल पाइप इमिशन. देयर इज नो इमिशन. सो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैव efficiency of near about 59 to 60%, converting electrical energy from the storage system to the wheels, right. So electrical vehicles have a driving range about 60 to 400 kilometers before needing recharging, right. The range for this is 60 kilometer to 400 depending upon the battery storage capacity. The typical recharge time is 4 to 8 hours depending upon the battery design, but can be faster. We can do charging with supercharger. That is, it is a faster process for the charging, right. Charging half the battery in 20 minutes with the help of supercharging, right. The efficiency of electrical motor is superior to that
of internal combustion engines and is improved further by integration new technologies such as regenerative braking and active suspension. Electrical vehicle also uses one or more electrical motors to traction motors for propulsion, and electrical vehicles may be powered through a collector system by electricity from off vehicle sources, or maybe cell contained with a battery, solar panels, or and electrical generators to convert fuel to electricity. Electrical vehicle include road, rail vehicles, surface and underwater vehicles, electric and electric spacecraft also. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी आगे चलकर यूज़ करने हैं. तो ये स्पेसक्राफ्ट्स भी हो सकते हैं, ये अंडर वाटर भी हो सकते हैं, सरफेस व्हीकल भी हो सकते हैं. सो हाउ इट वर्क्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वर्क कैसे करते हैं, राइट. मैं एक डायग्राम बना देता हूँ. बहुत ही सिंपल डायग्राम है. सिर्फ इतने ही यूनिट काम करते हैं इसमें, दैट इज बैटरी, नेक्स्ट जो है कंट्रोलर, these are the wheels, and this is motor, right. This is the simple diagram of electrical vehicle. So this battery transfer energy to the controller, and with the help of controller this goes to the motor, and then wheel operates. So this here electricity is transferred from a battery to controller, and then controller then sends the electricity to the electric motor when needed. The accelerator is connected to a variable switch which tells the controller how much power to send the electrical motor. Power output can be vary from 0 to full as needed. This is the working of this simple working of the electrical motor, sorry, electrical vehicles. Next we have to discuss electricity sources, e-vehicle, power storage option. For the e-vehicle, it is very important of the power storage option. When we increase the power storage option, we can fulfill our need with the help of electrical vehicle than using the conventional vehicle, right. So we have to concentrate. The major issue is in the electrical vehicle, it is power storage. क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब हम यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल डीजल गाड़ी यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक बार टंकी फुल कर दी तो हम 400 किलोमीटर तो जाते ही हैं. बाद में हर जगह पेट्रोल पंप है, वहाँ पर विदिन 2-3 मिनट में हम दोबारा टैंक फुल कर देते हैं, तो बाद में वो आगे हम जा सकते हैं. लेकिन इसका ऐसा नहीं है. अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए हैं तो 400 किलोमीटर जाते हैं, तो बाद में वहाँ पर चार्जिंग को लगाना पड़ता है, तो वो फुल चार्ज होने के लिए टाइम लगता है, राइट. तो हमें कंसंट्रेट करना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, राइट. सो
e-vehicle power storage options. Do we have to concentrate over? There are many ways to generate electricity of varying cost, efficiency, and ecological desirability. Uh, First one is connection to generator plants, right? Direct connection to generation plant as is common among the electric trains, trolleys, buses, and trolley trucks. Also overhead lines, third rail, and conduit current collection. Online electrical vehicle collects power from the electric power strips buried under the road surface through electromagnetic induction. And second one is onboard. There are two type of storage. One is connection to generator plants, and आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, राइट? जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है अपना मुंबई का लोकल है, वो कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो जनरेटर प्लांट को रहता है, राइट? उसके ऊपर जो स्ट्रिप रहती है, उसके ऊपर जो वायर रहती है, उसको टच करके वो आगे जाता है. दिस इज एंड सेकंड थिंग इज ऑनबोर्ड जनरेटर एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ऑनबोर्ड में क्या रहता है कि अपने गाड़ी में ही वो होना चाहिए. हम चार्जिंग करेंगे, गाड़ी में रखेंगे और जाएंगे. उसको कुछ लिमिटेशन नहीं कि इसी लाइन से जाना है, उस लाइन से कहीं भी ले जा सकते हो, राइट? दैट इज generated on board using diesel engine, diesel electric locomotive. Then generated on board using a fuel cell vehicle. Then generated on board using energy, nuclear submarines and aircraft carriers. Then renewable sources such as solar power, solar vehicle, right? So next point that we have to discuss, that is hybrid vehicles. So it is also possible to have a hybrid electrical vehicles that devise electricity from multiple sources such as onboard rechargeable electricity storage system and direct continuous connection to land-based generation plants for purpose on highway recharging with unrestricted highway range. Then also onboard rechargeable electricity storage system and fuel propulsion power sources, plug-in hybrid. Another from the chemical to electrical conversion is fuel cell projected for future use. For especially large electrical vehicles such as submarines, the chemical energy of the diesel electric can be replaced by nuclear reactor. The nuclear reactor usually provides heat, which drives the steam turbine, which drives a generator, and which then feed to the propulsion. This is all about the type of onboard electrical vehicle, onboard storage system, electrical vehicle system. So next, what are the merits and demerits of the onboard electrical system? So onboard storage, right? See here, we have to think about the merits. First merit, this is merit and demerit. Demerits. Okay, see here, first of all, price. It's a price is low operating price, very low price for refueling, and few moving parts in electrical motor translate to low maintenance. Demerits, what are the demerits about the price? High upfront cost, high initial price of energy storage system, and cost to replace batteries,
periodically, right? Second one is pollution. What are demerits? We have the zero pollution here. And about demerits, various electricity generation technique can have significant environmental impact. Current energy storage systems such as battery use hazardous chemical and is not easy to recycle, right? These are demerits. Then range and efficiency. See here, in a range and efficiency, this is a high efficiency compared to the internal combustion engine, right? And this low range because of low energy density. The highest range of electrical car is obtained by the Tesla model, that is 85 kilometer per watt, that was released in late June 2012, and that is certified range is 426 kilometer Tesla range. Safety. Merit is engine is safe, and demerit, lithium-ion batteries have the potential to heat up eventually to burn. This is demerit. And the new Tesla Model S has the best score in safety by the National Highway Traffic Safety Administration, right? So these are the onboard storage demerits, merits. These systems are provided by external generator plant, and the disconnected before motion occurs, and electricity is stored in the vehicle until needed. Full electrical vehicles power storage methods include chemical energy stored on the vehicle in the onboard batteries, typical with lithium-ion batteries. Then kinetic energy storage, flywheels. Then static energy storage on the vehicle in onboard electric double layer capacitor. See, then the batteries, electric double layer capacitor and flywheel energy storage are forms of rechargeable onboard rechargeable electricity storage system. By avoiding an intermediate mechanical steps, the energy conversion efficiency can be improved over the hybrids already discussed by avoiding unnecessary energy conversions. Furthermore, the electrochemical batteries conversions are easy to reserve, allowing electrical energy to be stored in a chemical form. So we have to stop here. In next lecture we discuss about the merits and demerits of electrical vehicle, right? There are lots of merits of electrical vehicle. हमने देखा है अभी टाटा का भी एक कार लॉन्च हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें ई व्हीकल यूज़ करने हैं और उसका इफ़िशियंसी बढ़ाने का, रेंज बढ़ाने का अभी रिसर्च चल रहा है, राइट? कम से कम टाइमिंग है, हम बैटरी रिचार्ज कैसे करेंगे इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है, राइट? 2012 में वो टेस्ला कार मॉडल एस जो बनाया था उसका रेंज था 426 किलोमीटर. अभी जो आ रहे मॉडल उसका रेंज अभी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस भी आपको देना पड़ेगा, राइट? So if you have any doubt, any problem, ask me on phone and study hard. I have provided you notes. Please read that notes. Next lecture we have to discuss merits, actual merits and demerits of the electrical vehicle, right? So we have to stop here. Thank you very much. If you have any doubt, please ask me on phone. Thank you.